Hello everybody. Today we will discuss anomalous Zeeman effect. So firstly see what is Zeeman effect we have seen in the previous lecture. This is basically splitting of energy levels in presence of external magnetic field. Okay. So here we are to see this is anomalous, this is specific, and it is shown by those atoms where mu s is not equal to 0. So this is anomalous and it cannot be explained classically. So we need to use classical theory, classical mechanical explanation. Okay. And one more thing, mu s is not equal to 0. Mean to say here you are going to include the impact of a spin. Okay. So for making simple calculation, we will make use of vector atom model. Okay, so let us discuss these things. So this is basically phenomena of splitting of the spectral lines, which are not singlet, into more than three components. This is Zeeman effect. Okay, you should know what is singlet, triplet. Okay, we have done this in spin orbit coupling. Now come here. We are going to use vector atom model. So we will take the vector sum of L and S to be total angular momentum. Okay. Now see, these are the, we will make use of quantum mechanical explanation. So the magnitude of orbital angular momentum is given by this formula in quantum mechanics, and S, this is this formula, and G you can write like this. We will make use of Larmor's theorem. We have done this in the previous lecture. Go in the video list and watch this lecture if you don't know about it. So this is how you can write the angular frequency of precession of vector J about weak magnetic field. Okay, so here we will discuss why the magnetic field is weak and what is Larmor precession. So firstly see the precession of J about B. What is the meaning of precession? When atom is subjected to external magnetic field, then what will happen? The magnetic moment mu J will experience a torque that causes vector J to precess around external magnetic field, and that torque we have seen again in Larmor theorem video lecture, that the torque this is equal to mu J क्रॉस बी. सो इसका यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास आता है ओमेगा. तो ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लार्मर थ्योरम, तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो लेक्चर. देन स्पेस क्वांटाइजेशन, इसका भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर है, तो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन वॉच द लेक्चर. तो मतलब क्या होता है स्पेस क्वांटाइजेशन का? अब जो मान लेता हूँ मैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, पेन से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस टिप is along the direction of magnetic field. This pencil represent the vector J, which is vector sum of L and S. When atom is subjected in the external magnetic field, this vector J, it precesses around the direction of external magnetic field like this and describe a cone. Okay, so this angle between external magnetic field and the vector J, that is specific. This angle is specific. और आप कह सकते हैं कि ये जो अलाइनमेंट है ना J की विद रिस्पेक्ट टू B, दैट इज डिस्क्रीट एंड सर्टेन. सर्टेन मतलब कि कुछ निश्चित होंगी, ठीक है, और स्पेसिफिक होंगी. क्लियर है? तो डेफिनेट इन नंबर एंड अलाइनमेंट इज स्पेसिफिक.
Only certain discrete orientations are allowed by quantum numbers. This is called space quantization. Okay. So class, here we will see some more basic things which we will use to find the interaction energy. So mathematically the facts must be very clear in your mind. This is Linde G factor. You will find a separate video lecture for it. And here what is happening? You see the magnetic field is weak. Magnetic field is weak. So firstly we see the coupling of L and S that remain intact. That remains as it is. So L and S feel torque, or you can say J feels torque, and it start precession motion about external magnetic field at a specific angle. Okay class. So I want to say here the angle between L, angle between the external magnetic field B and J, that is also fixed. Okay, L and S, that is also fixed. Now some more points are here. You can see the precession of J around external magnetic field is due to torque. ये हमने पढ़ लिया. S tends to precess twice as fast around V as L does. ठीक है, तो ये मैंने बुक से देखा हुआ है as it is. तो अब इसका मतलब क्या है, हमें मतलब समझना है. अब देखो, हम एक तो ये कह रहे हैं कि जो L और S की कपलिंग है वो as it is है, तो इसका मतलब ये कोशिश करेगा, बट क्योंकि इसकी कपलिंग L के साथ है तो जिस फ्रीक्वेंसी से L कपल करेगा उसी से S भी कपल करेगा. तो बेसिकली इन दोनों की जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसेशन है ओमेगा, दैट विल बी सेम. ओके, बिकॉज L S कपलिंग इज इंटैक्ट. नाउ सी, तो अब मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करें, ये वीक है तो इसलिए L S कपलिंग एज इट इज रहेगी. And this is how you can find the alarmer frequency. Now we are to see what will happen if we go on increasing the external magnetic field. अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर दूं, है ना, देखो यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं हम. अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा तो जो एल एस कपलिंग है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन. ठीक है, तो देखो जब वीक है ना तो एल एस आपस में बंधे हुए हैं एंड दे विल प्रोवाइड यू वेक्टर जे, और जे प्रीसेस करेगा अबाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. बट अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हाई है, स्ट्रॉन्ग है, तो एल और एस की कपलिंग ब्रेक हो जाएगी. ठीक है ना, तो बेसिकली आप अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो तो आप बेसिकली एटम को एक हायर एक्साइटेड लेवल में लेके जा रहे हो. ठीक है, तो आप उसको इतना एक्साइट कर दोगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप एटम को इतना ज़्यादा एक्साइट कर दोगे कि जो एल एस कपलिंग है ना वो ब्रेक हो जाएगी. तो फिर एल और एस अलग अलग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, एंड दे फ्रीली प्रीसेस, इंडिपेंडेंटली प्रीसेस अबाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो अब देखो जब वीक मैग्नेटिक फील्ड था तो हमने वर्ड यूज किया था टेंड टू प्रीसेस ट्वाइस एज फास्ट अराउंड वी एज एल डज. बट वो कर नहीं सकता अभी क्योंकि वो एस और एल की कपलिंग है. बट जब स्ट्रॉन्ग अप्लाई करते हैं तो एल और एस की कपलिंग ब्रेक होगी. तो अब क्या होगा, ठीक है, तो पहले वीक में दोनों की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी सेम है और यहाँ पे दोनों की डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि इसकी टेंडेंसी है, वेक्टर एस की टेंडेंसी है एल से ट्वाइस फास्टर प्रीसेस करने की. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि एक बात तो दोनों की लार्मर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है. दूसरी बात, लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ vector L. Okay class, so this is the thing. Now we are to find this excitation energy. Okay, so to find it we must know what is the total magnetic dipole moment and what is the strength of external magnetic field. If you take negative of dot product of these two, then you will find the
इंटरेक्शन एनर्जी। सेम हमने क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट में किया था, वहाँ पे भी हमने टू वेज डिस्कस किए थे इंटरेक्शन एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द magnetic dipole moment, total magnetic dipole moment, and you will take its dot product with B, or you can find mu j dot j, then it will also give you the same result. Okay, then after solving all these things, you know the value of j is this quantum mechanics, and then again I have left this is j, and then you have b. Okay, यू हैव बी। ओके, जब आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड एंगल कोस, एंगल बिटवीन वेक्टर जे एंड external magnetic field. Okay, so this is how we are writing the angles. Okay, so this is the thing, you will solve it and you will get this result. Now one more point is, if we find the shift in the energy levels, then we will treat it like this. In absence of external magnetic field, B is equal to 0, and the original frequency that will be equal to this much. तो यहाँ पे एनोमलस जीमन इफेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 है। बट अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ बी नॉट इक्वल टू 0, और जो बी है ना आपका वो वीक है क्लास, ठीक है ना, so this is not capable to break LS coupling, है ना। so this is how in presence of external magnetic field the energy levels will shift, तो इसलिए मैंने ऊपर डैश लगा दिया, देखो ठीक है ना। तो यहाँ पे एनोमलस जीमन इफेक्ट होगा, तो पहले ना अब ये जो ई एच डैश है एंड ई एल डैश वी विल फाइंड दिस फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो अब जो ई एच है उसमें शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और जो प्रीवियस पेज पे हमने डेल्टा ई का रिलेशन फाइंड आउट किया था, इट इज जी एम जे देन म्यू बी इंटू बी, इस रिलेशन का आप यूज करेंगे। फॉर द हायर स्टेट दिस प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट, फॉर द लोअर स्टेट इट विल बी दिस, इनकी वैल्यूज पुट कर दें, देन यू विल गेट this much. So if you want to find out the change in the frequency, then you will get from here. Clear? So and in the same way you can find delta lambda. It is very easy. You will use the same method which you have done in quantum mechanical explanation of normal Zeeman effect. Okay class, now we will see which transitions are allowed and which are restricted. For that you will again go to theory of probability of quantum mechanics, and there you will see which transitions are highly probable. Highly probable transitions are called allowed transition, and for that we have selection rule. So those transitions for which delta, for which mj changes by 0 or plus minus 1, those are highly probable, उनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन्हीं की इंटेंसिटी आपको मिलती है। बाकी अगर कोई होता होगा तो उसकी इंटेंसिटी इतनी लो होती है कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या मान सकते हैं कि जिनकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है या आप जिनको देख ही नहीं पा रहे, तो हम क्या मान लेंगे कि उनके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा। ओके, so this is how you can discuss this topic. Thank you class. In the next lecture I will come with this strong effect of the magnetic field, that is Paschen effect. Thank you class for watching the lecture.